nutcracker. No doubt, because out of the 5 or 6 such kind of Precis, which had been quite a task for the students of CSS, and they bewildered and chalked their minds. It is one of them. Precis of 2007, definitely it is one of them. I agree with you. It was a nutcracker. I'm fine, Amir Hamza. Ruamna, thank you, beta. Sanmia, thank you. I'm fine, dear. I'm fine, dear. Well, अमीर हमजा मुझे आपकी प्रेसी याद नहीं मिली, शायद वो सबाहत साहब को ना उन्होंने दे दी हो, मैंने पूछा है, उनके पास नहीं है. Yes, I'm doing great. Alia, thank you, beta. It wasn't a good result in 2007, Ahmad Shah. It wasn't good result. ठीक है? Chat public कर दें. Chat public कर दें. जी public कर दें for everybody. जी, Ma'am Razia to send it to you and also Ma'am Rabia. Okay, then they will send me. कर देंगी. कोई इंतजामी प्रॉब्लम हो सकता है. कल संडे थी ना, हो सकता है इसलिए नहीं सेंड हुई है. तो आ जाएगी अमीर हमजा, आ जाएगी. Don't worry. Well, start करते हैं जी. क्या ख्याल है, प्रेसी से कर लिया जाए? One paragraph should be answered. Paras as well. No. Amasha, your Precis draft, I told you already, your Precis draft will always be comprising a single paragraph. आपने एक ही पैराग्राफ में Precis लिखनी होती है. Precis is in a consistent single paragraph. चाहे जितने मर्जी पैराग्राफ आपको दिए जाए, Precis एक में ही होती है. ठीक हो गया जी? Precis से ही स्टार्ट करेंगे. अपनी Precis को पेस्ट कर दीजिए प्लीज. कैन वी हैव वन? नीचे कीजिएगा जी, थोड़ा सा नीचे. ये तो ऊपर, हाँ यहाँ रखिए, यहाँ रखिएगा. नहीं वो क्वेश्चन भी पढ़ना है, थोड़ा सा और नीचे. यहाँ सर, कैन वी हैव वन Precis and one comprehension assignment जो आप खुद चेक करें? Why not? I'll be checking. हमारी इसके बाद एक क्लास और है, उसके बाद मैंने ही चेक करनी है. Don't worry. अब नीचे कर दे जी, मैं Precis पढ़ूं. यहाँ रख दे ज़ायदा फरूक की Precis. यहाँ रुक दीजिएगा जी. Agree or not, but intentionally or unintentionally, we are influenced by the literature we read. Whatever we read is called a literary taste, and it has a deep effect on our personalities. It shows what we actually are. In adolescence, person is first moved by the work of a single poet, and then when he invades his mind one after another, we can see the domination of poets on his personality. On. Same thing happens when we start reading at larger stages. There is a comparison of poets running in our mind. We become critical, and this saves us from possession of one literary personality. A good critic thinks analytically and reads a wide variety of a good literature. It doesn't mean to hold a mind with knowledge. However, it saves our mind from cessation, and we start thinking a broader spectrum, so there emerges a new personality. Quite better. Last sentence modify होगा ज़्यादा. अच्छी लिखी Precis, लेकिन एक बहुत grievous fault है इसमें ज़्यादा, and that is you have done it in first person. I, we, us. You have mentioned that. Precis can never be in first and second person. इसकी बिना पे आप फेल हो सकते हैं, कर दिए जाते हैं. इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. इसलिए ये देखिए, अपनी तरफ से आप एक अच्छी Precis आपने की, नो डाउट काफी अच्छी भी है. मास्वाई लास्ट सेंटेंस के थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, लेकिन आप अनइंटेंशनली इसमें फर्स्ट पर्सन यूज कर गए हैं, जो कि नहीं होना. गॉट द आइडिया? फर्स्ट पर्सन नहीं होना. 152 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, चले अप्रोक्सीमेटली ठीक है, ये 140s की रेंज में है जी. आईफोन रीडर ठीक है, ज्यादा अच्छी Precis है. The human being is influenced consciously or unconsciously by the piece of work he reads. Is also true of everything we eat. No eating analogy. iPhone, cut that eating analogy. Just ने ये analogy दी है eating वाली, ये analogy है आपको समझाने के लिए. just like, ठीक है, वजाहत नहीं देनी हमने Precis, इसको कट कर देना आपने food वाली analogy को. It is also true for everything we eat. Cut कर दें इसको. The entire educational history of an individual casts an influence on his personality. For instance, भी नहीं लिखना Precis में iPhone. An adolescent, comma,
fond of reading, comma लगाइए adolescent के बाद, fond of reading, फिर comma लगाइए, will surely carry a memory of his favorite poet. Regardless of the sensibility of the literature, whether an individual develops the habit of reading in adolescence or maturity, in an empty room of his personality is filled. नहीं, यहाँ पे आप perceive नहीं कर सके वो क्या कहना चाह रहा है. यहाँ एक different perspective है थोड़ा सा. When an individual is new into the habit of reading, he has an obsession for a particular author. Or several authors cast an impression on his mind. This awakens a sense of critic in him, and he begins to compare one writer with another. This critical part prevents an individual from the dominance of any particular author and shapes his personality. शाबाश. Last आधा हिस्सा बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा. आधा हिस्सा जो आईफोन ऊपर 2-3 जो फॉल्ट्स हैं उनको ठीक करना है. एक वो एडोलेसेंट और मैच्योर रीडर वाला, उसका काज नहीं आप दे सके, वहां पे भी थोड़ा सा फॉल्ट है. गॉट आइडिया. पहला हिस्सा बल्कि ओवरऑल फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेसी जो है ना, ये प्रिसीजन बेस्ड तासुर भी नहीं दे रही है. दूसरी बहुत नपतुला आया, दूसरा आधा हाफ और बिल्कुल एग्जैक्ट आया. तो पहला थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. आप सुन लीजिए प्रेसीज, आपको समझ लग जाएगी. तलहा. A writer's work affects us knowingly and unknowingly, just as food nourishes us, so does literature. Food वाली analogy तलहा कट कर देनी. We are what we read. We नहीं आना प्रेसी में तलहा. This can be explained by closely looking at our literary development. For example, भी नहीं आना प्रेसी में. Almost everyone can remember being amazed by a poet when they were young. Everyone आ गया तो they नहीं आएगा फिर, ठीक है? When he was young, they नहीं आएगा फिर. This amazement passes from one poet to another. ठीक है? As we grow older, we stop being impressed by different poets, and the reason for this is that as a personality develops, we start getting less influenced by different poets. We start comparing them with each other, one another, my dear Talha, one another, and become their critics. This in turn protects us from being negatively influenced by others. नहीं, negatively का word cut कर दें, influenced by others. Negatively का word cut कर दें. An unbiased critic is one who reads in abundance and is critical about it. Unlike popular consensus, this doesn't just lead to an accumulation of knowledge, but it also protects us from the influence of powerful personalities. This helps us understand wide-ranging ideas and enables our personality to assert itself. आपकी प्रेसी में थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे हैं, लेकिन फॉल्ट्स हैं तलहा, जहां-जहां मैंने बताए. और सबसे बड़ा फॉल्ट जिसकी वजह से आप फेल हो जाएंगे वो ये है कि इसमें आपने फर्स्ट पर्सन यूज किया. ये थोड़ी सी लंबी भी है, टू सम एक्सटेंट इट इज लेंथी. गॉट द आइडिया. लेकिन निचले हिस्से पे आके आप भी संभाल गए हैं प्रेसी को, आप भी इसको संभाल गए हैं. उसामा, इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग. अच्छा टाइटल है, इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग या इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग, यही होना चाहिए इस प्रेसी का टाइटल. Any literary piece of writing has influence upon readers' minds. Readers के ऊपर S के ऊपर apostrophe लगाइए उस्मान, apostrophe ले. Influence of author's personality can reflect through his work. Can be reflected through his work. A youngster or grown-up who does not have a sound reading background gets influenced by the charm of any writer. Whatever he reads in his life possesses his might. With the increase of reading habit, one will gradually develop his taste and ability to understand the writer's work which the reader is going to study. With increase of reading habit, one can develop sense of understanding the literature and starts comparing writers eventually. Growing literary power can save us from following certain personalities and certain literary works. And we नहीं आएगा, my dear. We can criticize the writings and on accumulation of knowledge does not mean to dominate anyone with your knowledge, but to reason and critically analyze them. बेहतर आई हुई है, लेकिन इसमें फॉल्ट्स हैं. और लास्ट जो ये जो सेंटेंस है, accumulation of knowledge, इसका और ऊपर वाली प्रेसी का आपस में कनेक्शन गैप आ गया है. उस गैप को ब्रिज करें, ठीक है? और जहां छोटे-छोटे 2-3 फॉल्ट्स हैं उनको आपने कैटर करना है. जी, रीडिंग इफेक्ट्स ऑन माइंड, ठीक है. A fiction writer tries to affect the reader either consciously or unconsciously. The reader surely gets affected by such readings. The choices of these impactful reading is not merely dependent on, does not merely depends on, is not merely dependent on, ठीक है, is not merely dependent on one's literary taste. Rather, it is the reflection of one's literary educational background. Education background की बजाय educational background.
A reader who enjoys the pleasure of poetry can recall a time when he too was inspired by poets successively. The reason of this changing playability in the stronger personality of a poet than the reader himself is school of mind from multiple authors also affects one another inside the brain of the reader. A good critical reader, instead of yielding to one author, has the power to select the best and complementing attributes of the authors. Towards statement, he reads discriminating words. The mind asserts its dominance and gives each author a specific place, reflective of the reader's personality. हमेशा नीचे वाले हिस्से में आपने बातें गलत नहीं की हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से की हैं. बड़ा असर्टिव सा, एक सजेस्टिव सा, एक कमांडिंग सा टोन आ गया है प्रेसी में. निचले हिस्से में उसका तासुर अच्छा नहीं है, उसको खत्म करना. वैसे ठीक है उस्मान, आपकी ठीक है प्रेसी 130 वर्ड्स की, 34 वर्ड्स की. उसवा मुख्तार, बाकी प्रेसी ठीक है हमेशा. उसवा मुख्तार, उसवा की कीजिएगा जी. नीचे क्या था, क्वेश्चन था उसवा का कोई? कीजिए जी. Influence of literature of human mind, ठीक है. The author of work of imagination is trying to effect नहीं, उसमें to affect a के साथ verb आना है. Trying to affect humans and humans too are being affected. Affect दूसरे हिस्से पे भी affected unknowingly. The content that we read and the food we eat has influence upon us. ना us और we आएगा, ना food वाली analogy आएगी. उस वक्त दोनों को कट कर देना. Reading choice and personality of an individual is a reflection of their literary education. An individual आपने दिया, आगे their दे दिया, is a reflection of his literary education and not just literary taste. The ones who are now new to reading poetry, having some literary sensibility, are driven away by the strong expression of words. It is not because after experiencing they don't have much interest, but because their undeveloped personality is greatly attracted towards each poet's piece of work. Their mind is completely engaged in one poetry at a time, one poet at a time, one poet at a time, and later after reading a number of poets, not poetries, poetry ki jama nahi hoti, poets, they are able to critically evaluate and do comparisons instead of being possessed by one literary personality. बहुत लंबा sentence हो गया है, कुछ ज़्यादा ही. Reading wide is only valuable when it makes one a good critic instead of being influenced by anyone. Everyone करे, anyone नहीं. The variety of views that one has impacts personality development in thinking. थोड़े से faults हैं उसमें, mid portion में थोड़े से faults हैं, लेकिन अच्छी कोशिश है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू रीडिंग ओके आ जाएगा. द राइटर ऑफ ए वर्क ऑफ इमेजिनेशन हैज कंप्लीटली इंपैक्टेड अस एज ह्यूमन. लाइक एवरीथिंग वी ईट affects our entire self and so does the material we read. कट कर दें आलिया फूड वाली एनालॉजी. throughout our lives our नहीं आएगा, we नहीं आएगा. whatever we read influences us one way or the other. In our teens we are influenced by certain writers, and adult towards certain others. This critical process keeps going and our preferences keep changing. In the mind, we can differentiate all those writers on the basis of contrasting qualities. This develops skills for good critic. Reading should be done to accumulate quality knowledge and not just material. नहीं, यहाँ से भी आप समझ नहीं पाए. It helps in the development of one's true self, which is not easily affected by its surroundings, giving space to numerous different views and discovering your real self. नीचे ठीक है. ऊपर का पोर्शन बहुत अच्छा नहीं है आलिया, ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं और वी नहीं आएगा. थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है आपने इसको. गॉट द आइडिया तायरा खान? क्रिटिकल एनालिसिस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. बहुत अच्छा टाइटल नहीं होगा. इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कर ले तायरा खान. विजनरी ऑथर्स एंड their work attempts to influence us. सब लोग इसको वी और अस में कर रहे हैं. यही वजह थी कि 2007 में 97% कैंडिडेट फेल था प्रेसी के पेपर में. ठीक है, एक वार्निंग दे रहा हूं आपको. मैंने आज तक आपको वार्निंग नहीं दी, आज दे रहा हूं. बहुत कॉन्शियस रहना है. यही ट्रिक है, यही वो एम्बिवरिटीज हैं जो आपको अलोर कर सकती हैं पेपर में. माइंड, अपना माइंडसेट को बहुत अलर्ट रखना है.
खुला रखना है अपना जहन कि हमने थर्ड पर्सन में प्रेसी को कन्वर्ट करना है. It is my message to everybody, please. Got the idea? Inadvertently आपने unintentionally किया है इसको. इसी तरह पेपर में सबने किया था और 96% कैंडिडेट फेल हो गए थे इस पेपर में. Got the idea? सिर्फ ये प्रेसी के पेपर के फेलियर की बात कर रहा हूं. कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गया था जी. This may not necessarily correlate our literary taste or previous education background. If we contemplate our adolescent period, अब देखिए ये बिला वजह हम इस तरह लंबा करते हैं तारा खान. If we contemplate our adolescent period, आप करें during adolescence, we find a time when our mindset was completely dominated by some poetic personality. Is completely या is आएगा. This is largely due to those empty spaces of our consciousness which crave to be filled and refilled with strengthened but clear vision. This process can occur in older ages if the concerned person is not habitual of excessive reading. No, misperceived. Consequently, well-read mind starts comparing one dominant or poetic personality with another, one qualitatively and quantitatively. This judgmental behavior leads to the growth of critical analysis, which later on limits the obsession with initial personalities. Eventually, we start analyzing different aspects of life and correlate them in accordance with the elements of our imaginative person. नहीं, faults हैं तायरा. इसमें 3-4 जगह पे perception का fault भी आया है. अगर actual passage ना पढ़ा हो तो तायरा आपकी प्रेसी बहुत अच्छी लगे. अगर actual passage ना पढ़ा हो फिर बहुत अच्छी लगे. डिसीव कर सकती है, लेकिन राइट नो इसमें प्रॉब्लम है. मैं गाइड करता हूं आपको. मैं आपको इसका अपना ड्राफ्ट भेजता हूं. मैं भेजता हूं, साथ पढ़ के बताता हूं. एनालाइज करूंगा मैं खुद जी. द इजीली स्वेबल ह्यूमन माइंड्स, not a good title, Muhammad Amir Hamza. We are affected by an imaginative piece of an author which is not solely dependent on our literary taste but also on our educational and linguistic background. The reason behind a piece striking a chord with us is due to the poet's dominant personality infiltrating into a weaker personality. Our ability to critically distinguish between writers is due to our very own cognitive being overwhelmed by several writers. A good literary critic doesn't rely on the opinions of others but reviews the different works himself. However, wide reading ensures that we are not dominated and influenced by an individual or a small group. Eventually, different views amalgamate themselves and find an abode in our mind, making our personalities distinct. काफी कुछ अच्छा है इसमें, लेकिन वी और आई ने बहुत खराब कर दिया. ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट भी है ये प्रेसी, खराब कर दिया. तारा खान, वर्ड लिमिट आपकी ठीक है, वर्ड लिमिट ठीक है आपकी. नीचे कीजिए. हाँ जी, शजिया का. Sir, my apologies, I have not prepared Prezi. I'll send you today as assignment. Please give me some time. Sure. Sir, my हो गया. ठीक है जी. मानूर साजिद की Prezi ऊपर ले जाएं जी. It is ingrained in human nature that any piece of imaginative writing influences the ideological content of personality, whether consciously or unconsciously. Right. Besides giving literary pleasure, it becomes part of one's outlook. It is not true to say that poetry has more impact on adolescents. It can work the same if a mature person hasn't developed his idea through extensive reading in his earlier life period. Good handling. Shabash, Manur, बहुत अच्छी handling यहाँ तक. Extensive reading frees a person from the danger of being overwhelmed by any single writer. It grows one's sense of analyzing the things critically. If one imbibes different views, it broadens one's vision. One is better able to tolerate wide range of opposing ideas. Moreover, by comparing and contrasting, one can evaluate different literary works according to one's own perception and personality. Quite good. आखिर में थोड़ा सा झूला है, लेकिन बहुत अच्छी प्रेसी. अभी तक आने वाली प्रेसी में सबसे अच्छी प्रेसी. My compliments, Manu. Oh, sir, got it. We'll try it again. Yes, Saida, there is a problem. ठीक है, we, our वगैरह नहीं आएगा, food वाली analogy नहीं आएगी. We are what we read. We are के साथ ना बनाए टाइटल. ठीक है, मारिया. लेकिन टाइटल में फिर भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप ना बनाए. ठीक है, influence of reading कर रहे हैं. मारिया ऋषि, influence of reading कर रहे हैं. So I couldn't make it to get it done. Can you check mine later? Why not, Akila? Why not? जी, सबा को ले लें जी, इन कर लें. Imaginative personality stature. नहीं, ताहिर खान थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, अमेंड करें इस टाइटल को भी. जी, आसान. Impacts of reading. Good title.
An innovative writer always leaves an impression on reader's mind. Anything one reads has different kinds of impacts on his or her mind, directly or indirectly. A young person or an old reader without sufficient reading background is likely to be inspired by charms of one or more than one writer. Good. Yahan tak bahut achhi. With the passage of time, as one's reading capability increases, he or she starts comparing to different authors because of their distinguished abilities. Distinguished ed लगाइए abilities, pen typing mistake है मेरे ख्याल में आपकी, and different style of expression. This critical thinking approach develops literary sensibility and saves him or her from blind possessions of any writer. Moreover, it encourages him or her to do constructive criticism on any writing. Excessive reading is not good as well-stocked mind, but it is precious in a sense that it makes one's mind less vulnerable to the strong literary authors and to develop one's own opinions. My compliments, son. Love you, man. Good presi. Shabash, shabash, shabash. बहुत अच्छी प्रेसी आई है ये भी, ठीक है, प्यारी प्रेसी दी आपने. Well, critical analysis and personality development. ठीक है, critical analysis and चलें आ सकता है title. Visionary authors and their work attempt to influence people, and they are influenced by it, and intentionally or unintentionally. This may not necessarily correlate their literary taste or previous educational background. ये तो हो गई है. By contemplating the adolescence period, there must be a time period when the mindset was completely dominated by some poet personality. This is largely due to those empty spaces of consciousness which crave to be filled and refilled with strengthened but clear vision. यहाँ फिर अभी problem है. This process can occur in older age as if the concerned person is not habitual of excessive reading. ठीक है, ये point ठीक है. Consequently, well-read mind starts comparing one dominant or poetic personality with another one qualitatively, and ये लिखना जरूरी नहीं है qualitatively या quantitatively, इसको आप कट कर सकते हैं बीच में से, ठीक है. Next, जी, sorry, this judgment behavior leads to the growth of critical analysis, while later on limits the obsession with the essential personality. Eventually, analyzes different aspects of life, people, and correlate them in accordance with the elements of their. Okay, ठीक है, अब काफी अच्छी हो गई तारा, काफी सारे नकाइस निकल गए. शाबाश शाबाश, है ना जी. Impacts of literature in the real life. No fiction word of a writer struggles to inspire the person, and surely one gets the result. Just a minute. Non-fiction word of a writer struggles to inspire the person, and surely one gets the result. Okay, literature is always tending to leave the footprints in ourselves. Initially, it inspires a youngster, but the habit gives him or her many inspirations. Hence, by the time inner soul sounds of a person changes through the poet's personality, a younger mind's habit also repeat in an older mind with initial to habitual personality. नहीं, यहाँ गड़बड़ कर गए आप, है ना? A literature inspired in the heart and many compare in the mind. No ambiguity है इस फिक्रे में भी. It is not rendering clarity of thought. Strong analysis develops through the reading habit. Practically, it has to be a voice to stand rather than leave to it to others. Knowledgeable reader is not necessary, but a strong analyst. It gives the power to stand against dominance. Likewise, in reality, strong analysis gives power in front of central authorities. Different incidents of life with analysis organize us in a well-mannered way. हिना, आपकी प्रेसी की सबसे पहले मैं बता दूं एक जो बहुत खूबसूरत चीज आई है, जो अभी तक आने वाली तमाम प्रेसीज में से सबसे अच्छी है, जिन्होंने एक्यूरेट प्रेसी की, हसान वगैरह ने, उनसे भी अच्छी है. वो है आपकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन. हर सेंटेंस नपातोला प्रिसीजन बेस्ड है, लेकिन ये प्रेसी आपका एनालिटिकल टच दे रही है. वो उन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही जो बीच में है, आपने उनको और तरीके से ट्विस्ट देके प्रेजेंट किया है. अपना एक माइंडसेट जो आपने ग्रास्प किया इस प्रेसी में से, वो आपने देने की कोशिश की. नहीं, प्रेसी में हमारे पास जगह नहीं है कि हम अपने पास से कुछ भी दें. गॉट द आइडिया? हमने वही कुछ देना है. प्रेसी इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ राइटर्स थॉट्स. या फिर आप कहते वक्त आपका लैंग्वेज ने साथ नहीं दिया, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है आपकी में ग्रामेटिकली, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं शायद वो लैंग्वेज आप ऑप्ट नहीं कर पाए. प्रेसी में थोड़े से फॉल्ट्स हैं. हफ्सा,
Various thoughts affects Afsa A, not E, affects on a person and developing personalities. And developing personality, no. ये लिखने की जरूरत नहीं. Everything happened with you have some purpose. No, ambiguous fikra hai, you bhi nahi aana Hafsa isme. Every scenario left out some impact on mind. No, leaves some impact on mind. With the passage of time, your thoughts get replenished. Nahi, your nahi aana. Third person mein convert karna hai to adolescence. In adolescence, a person attracted towards colorful aspects of life. A person is attracted. Everything seems to be very poetic and obsessed. These poetic thoughts cannot develop your thoughts more productive. Nahi. Aapsa gadbada rahi hai. But when a person reaches that maturity, when a person reaches that maturity, he is swept as compared to some people who learn skills and adolescents are proficient at maturity. Grammar की बहुत mistakes हैं आपसा बेटा. Every person has differentiable intellectual skills, and these skills lead him towards criticism. As a critic, people are not influenced by everyone and feel dominated from one another person because of their thinking pattern. नहीं गड़बड़ है आपसा, नहीं परसीव कर पाए अच्छे तरीके से प्रेसी को. आपको रीराइट करनी चाहिए. सुने सबकी प्रेसी को, सुने मेरी भी बाद में सुने, फिर आगे चलते हैं जी. A literature cannot be served in plate. The author of literature wants to draw a portrait about that what he eats, it reflects on the tongue. No, Nurul Huda yahan tak bilkul theek nahi hai. What he eats, it shows the effect on his body, and it explains that anything it took show pleasure on his personality as it's same in literature. नहीं, जो कहना चाहिए था वो अब कह नहीं पाए. And Nurul Huda, what he calls a taste of literature. The fact in literature is that in opposite, the writer expresses that literature, what he reads is not shown in them. Instead of some of them only remember in some romantic moments in their youth, and after rarely they remember it. There are two kinds of critics. A critic can neither be good nor be bad. Good critic is a well-stocked mind. It also always dominates on others in every aspect of life. The author said it with cherish your personality in all manners of life. नहीं नूरुल हुदा बेटा समझ नहीं आई है, ऊपर से ग्रामर में थोड़ा सा काम खराब किया है. नीचे कीजिएगा थोड़ा सा influence of learning skills on personality. ठीक है, influence of reading कर ले आपसा. रीडिंग करेंगे तो टाइटल अच्छा है. नूरुल हुदा बेटा आप इसे रीराइट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक मेरी प्रेसी नहीं सुनेंगे उस वक्त तक नहीं. How can I remove the assertive or commanding effect from my précis? The passage itself was suggesting things. मैं गाइड करता हूँ अच्छा, मैं आपको अपना जब पढ़ाता हूँ ना अपना ड्राफ्ट तो आपको समझ लगेगी. गौर से सुनना है उस वक्त. मारिया, we are what we read. Literature has an effect on people whether they realize it or not. Personality of a person can be assessed through an analysis of their literary education to his literary education. ठीक है, पर्सन लिखा है ना, या पर्सन्स कर ले. वर्क ऑफ लिटरेचर, आई नहीं देना प्रेसी में. Poetry can have a profound effect on human of any age depending on their reading habits. In adolescence, reading poetry for the first time can feel like a domination of mind by a strong personality with strong ideas previously unknown to the mind. With time, readers start developing the habit of reading, assessing, and accumulating opinions of different writers in their minds. This develops critical ability, and a good critic is able to assess the work of literature without being dominated by the knowledge of the writer. When one is able to analyze effectively multiple ideas cohabit their minds, yet their own personality asserts itself because of their own critical thinking ability and adapt ideas suitable to them. काफी अच्छी प्रेसी मारिया रिशम, वेल डन. बड़ा खूबसूरत फ्लो है आपकी प्रेसी का, थोड़ी सी लंबी है. सोबिया नवाज जी. Effects of wide reading. The author of fictitious literature attempts to affect the audience. Affect. Sobia, E nahi, A. Affect the audience unintentionally or intentionally. An audience receives, N लगाया है ना, S लगाई, receives the influence of that work like diet. कोई जरूरत नहीं diet की बात करने की. Like diet, इसको कट कर दें. Thus,
What a reader chooses is a matter that will design his personality dynamics. When a reader starts reading, he gets invaded by the strong personality of that writer. But when he becomes mature in reading, he gets क्यों present past mix कर रहे हैं? He gets affected by many authors. He starts weighing them and becomes a critic. Getting critical power should be the ultimate end of wide reading, which must not be left to professional critics only. Wide reading is a fruitful process which enables the reader to get rid of from the anage, to get rid of the influence of the few authors. It equips the reader with varying views of life and makes his personality distinctive. काफी अच्छी है, शाबाश, सोबियानवाज बेहतर है जी. It doesn't matter if the passage in first person or Precis should be in third person. Yes, Emma Shah, एक्चुअल पैसेज किसी भी सेंस में हो आपकी प्रेसी थर्ड पर्सन में ही होगी. Effects of broad reading. Author of creative literary pieces try to greatly influence us humans. What we read affects our individual identity as our diet affects our health. Diet वाली analogy भी कट करें आगा साहब, और we को भी कट करें, दे में convert करें. Every poetry lover who is aware of its allure can recall themselves. नहीं, every himself आएगा, himself. And who is aware of its allure की phrase भी कट कर दे. आगे लिखे can recall himself being enchanted by the poet he reads in his youth. या तो फिर every poetry lover ना करें, all poetry lovers कर लें, all poetry lover. बाकी फिक्रा नहीं छेड़ना पड़ेगा. This honeymoon period does not solely end due to maturity, but due to the development of his faculties of critic. The more we read, the less the personalities of the author overpower us, and we are able to compare them. This ability protects us from being overly convinced and infatuated with the author. This makes us a critic. Now, a good critic has a broad reading. This vast reading helps in not only accumulating knowledge, but in compartmentalizing different perspectives based on one's own preferences. In other words, our own personalities in charge. Shabash. निचला हिस्सा बहुत अच्छा है, ऊपर छोटे-छोटे चंद एक faults हैं. Sir, I could not do the Precis. Can I send you after that class? Yes, you can. Daud Ahmed. Reading brought alteration in human thinking. There's no doubt that नहीं कॉमर्स में कोई कुछ नहीं देना. दाऊद हमने कट कर दे इसे. ये आपकी लाइन है. कोट नहीं देना Precis में. There is no doubt that fantasy influence human and they too are affected by it. No, not fantasies. Literature. So whatsoever human ear or read, eat लिखना चाह रहे हैं शायद, कट कर दें eat को. Human reads affects, a के साथ दाऊद affects, but reading is not anticipating of or liking of genre, rather it develops through careful scrutiny of history that puts its impact. No. Moreover, in young age, every sound person either grabbed by work of one or more poets, it is merely because of her observation in earlier age. That is missing in later stage of life. Less reader can be affected by younger ones. Every author attracts us, but with the passage of time, readers draw a line between one author and other, and this is based on their writing styles. This process of differentiating saves human from writers' thoughts. Good analytical power comes from massive reading, and this does not an accumulated storage of knowledge. Rather, it can provide defensive tool of dominance. Therefore, every person possesses influence at certain point. दाऊद अच्छी प्रेसी नहीं है, फॉल्ट्स हैं, प्रॉपरली परसीव नहीं कर सके इस प्रेसी को. आई डोंट नो व्हाई. आप बड़े अच्छा लिखने वाले हैं, लेकिन ये प्रेसी आपने ठीक नहीं लिखी है. नॉट अ गुड प्रेसी. Got the idea? Zunaira, developing critical reading. Okay. Manur, it is ingrained in human nature. हो गई ये वाली, ऊपर करें जी. ठहरिए. नहीं ये नहीं हुई. Sorry. It is ingrained in human nature that any piece of imaginative writing influences the logical content of personality, whether consciously or unconsciously. Besides giving literary pleasure, it becomes part of one's outlook. It is not true to say that poetry has more impact on adolescents. It can work the same if mature person has not developed his ideas through excessive reading in his earlier life period. Extensive reading frees a person from the danger of being overwhelmed by any single writer. कर ली हुई है यार ये. It grows one's sense of analyzing the things critically. One
If one imbibes different views, it broadens one's vision. One is better able to tolerate wide range of opposing ideas. Moreover, by comparing and contrasting, one can evaluate different readings works according to one's own perception and personality. इम्पैक्ट ऑफ रीडिंग बिल्कुल ठीक टाइटल है। मानूर आपकी प्रेसी में पढ़ चुका हूं, आपने थोड़ी सी मॉडिफाई करके दी है, ठीक है, अच्छी हो गई है जी सर। I'm typing my Prezi homework. I was occupied by research. I won't be too late, but in slow in typing. Please check it. Then I'm sending it. Well, human beings and their sense of perception of knowledge. नहीं आमना, ये title बहुत अच्छा नहीं होगा. Human beings have influence upon one another. No, either they met or not. No. The same thing happens when we read a book. We have been influenced by a writer during reading. It doesn't concern merely that it sometimes something according to our taste, but it affects us. History of individual training can be checked by listening some poetry from him. No, it does not mean he has interest in it. It means the poet have effect on him. The poetry occupy the place, and this place one after the other with discriminate qualities. Many readers are valuable when we take benefit from them because somehow it affects our personality. No, I'm not totally misperceived Prezi. Not very good. A man is known by the books he read. हो सकता है in the wider sense. Zaida, नीचे कीजिए जी, ऊपर चला गया थोड़ा सा, गिना. Human beings get affected from whatever they read, especially in imaginative reading, you know. Each and every author has different qualities and leaves varying imprints on readers' minds. As a result, reader develops the sense of critic, which is in turn saves the reader from being possessed by the author's thinking. Also, being affected from the dominance of authors one after the other cancel out their effects and spirits the reader with their own with their own peculiar personalities with a touch of different thinking process. के ना जितनी लिखी ठीक लिखी, थोड़ी लिखी, point missing है, 3 point missing है इसमें. The impact of literature on human beings. ये ज्यादा बेहतर होगा ज्यादा फरूक जी. दुआ अमान ऊपर ले जाएं जी, जेंटलमैन ऊपर ले जाए. हाँ जी, दुआ की प्रेसी और ऊपर चले. Impacts of reading on critical evaluation. Any literary piece of writing has a bearing upon reader's mind as well as shapes their attitude, shapes his attitude. The degree of influence relates to the strength of author's personality reflected through ed लगाइए, written material and the weakness of the reader's attributes. A young reader or an older reader without sufficient reading background is more likely to be inspired by the charms of one or more than one writer's beautiful shabash. Gradually, as one's span of reading increases, then he or she starts evaluating one another from another, and this ability of assessment develops critical thinking, shabash, which protects one from the supremacy of any particular form of writer. Value of excessive reading is not actual to knowledge, whereas the critical judgment that spouts from it has, at a single time, multitude of ideas, different authors resides in an intellect, but the reading assorts them according to his or her taste. Reader, well done, काफी अच्छी प्रेसी, शाबाश. I tried, sir, thank you. Hassan, zabardast. And distinguished was typing this. Yes, I understand. Your English is quite sound, Hassan. Very good, presi. Sobia Nawaz. Effects of reading. The author of a fictitious attempting to affect the reading unintentionally, and audience receives the influence of that work like that. नहीं, ये हो गई हुई है. ऊपर ले जाएं. अच्छी नहीं है, इसमें फॉल्ट थे सोबिया. ऊपर ले जाएं जी सोबिया की प्रेसी. ले जाएं जी. यार इस तरह बड़ा टाइम लगता है. An individual is affected by an imaginative piece of an author which is not solely dependent on our literary taste. फिर आवर नहीं आवर आना correct नहीं हुई, but also on their educational and linguistic background. The reason behind a piece is striking chord with a person is due to the poet's dominant personality infiltrating into the weaker personality. One's ability to critically distinguish between writers due to their very own cognitive being overrun by several writers. A good literary critic does not rely on the opinions of others but reviews the different works himself. However, wide reading ensures that an individual is not dominated and influenced by an other person or a small group. Eventually different views amalgamate themselves and finds an abode in one's mind, making them personality distinct. एंड पे आके अभी भी थोड़ा सा फॉल्ट है. ऊपर वाला आवर भी खत्म करें. काफी बेहतर हो गई है, काफी बेहतर हुई है जी. हैव नॉट
You read I have read your Precis, my dear Daud Ahmed. I commented upon that. Muhammad Jawad, Kariachi. Whether an author intends or not, his work affects us. We are unknowingly affected by it. It is similar to eating. Cut kar dein ji, eating wali analogy. We not only taste it but digest it. Cut kar dein. We not merely read an author for the pleasure but are influenced by it based on our reading history. ये बात ऊपर कर चुके हैं. Repetition है. V भी नहीं आना जवाब प्रेसी में. थोड़ी गलती आ रही है प्रेसी में. Anyhow, anyone who has literary history can tell us how much he feels bored in youth when listens to the poetry. No, 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 no. It is because we are affected by a high literate person. No. This also happens to a person who does not read as much. He feels himself in the possession of an author, but after a few time nahi aayega, he starts to compare and make his own criticism in his mind. The accumulation of knowledge in his mind gives each author his place. No, जवाब समझ नहीं आई बेटा, गलत लिखी है. जी, महक, or to send Precis to you for checking later. Thank you, sir. वही third person वाला issue. जी, third person वाला issue, sir. My title was "We Are What We Read." Is it okay? It is not very good title, Maria Risham. Better change it. Impact of reading, Alia Naveed Khan. The writer of work of imagination completely impacts the human mind throughout life. The human mind is influenced by the material he or she reads in one way or the other. In adolescence, a certain kind of writing attracts us, and in adulthood, a certain other. That develops one's reading and critical ability. Reading several different pieces helps to track of different perspectives. And काफी अच्छी हो गई आलिया, बहुत अच्छी है जितनी लिखी है, उसके साथ मिला लें बाकी की. That is going to be fine. ऊपर ले जाएं जी दाऊद अहमद जी. Okay sir, रोकिएगा. I will attempt it by today. Can I send you Precis again after class, sir? No need. After the class send कर दें. आमना title human beings and their sense of perception of knowledge. हो गई हुई है जी ये. आमना की Precis ऊपर ले जाएं. ऊपर ले जाएं आमना की Precis. शहरियार, रोकिएगा. Sir, the saying is a man is known by the company he keeps. No. ये title नहीं आएगा. Mustafa Imran. How reading influences critical thinking. ठीक है, authors consciously affects and in turn consciously affected by the fiction books the authors write. Reading does not only develop a person's literary sense but shapes their personality as a whole. A person's लिखा है ना, his आएगा आगे, shapes his personality on the whole, as a whole भी ठीक है. Those new to the world of poetry are often in awe of poetry but get familiarized as they experience the works of other poets over time. The same is true for those who start reading later in life, who develop critical thinking as they continue reading works by a variety of authors. This prevents them from over-impressed by any single author and develop strong personalities, in turn becomes good critics in their own right. While reading is not meant to fill our mind with information in a shallow way, but to develop strong independent mind instead of blindly following the opinion of powerful published personalities. निचला हिस्सा काफी अच्छा है मुस्तफा, ऊपर वाले में फॉल्ट्स हैं बेटा, ऊपर वाले में फॉल्ट्स हैं. मुझे फीवर है, काइंडली आज का टाइम दे दें, मैं आफ्टर द क्लास सेंड कर दूंगी. नो प्रॉब्लम सारा दिलावर, बाद में कर दें. थैंक यू सर. वी विल ट्राई टू वर्क मोर ऑन Precis since I am not very good at it. Some of you, but right now जितनी आपने दी है आलिया, दोबारा जो दी वो अच्छी आई है. सुनिए, मैं इसका एक ड्राफ्ट पढ़ के सुनाने लगा हूं. मेरी रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए अपनी सब अटेंशन इधर रखिएगा, सारी अटेंशन इधर रखिएगा. देखिए ट्रिक ऑफ द ट्रेड क्या होता है. मैंने आपको बताया था कल ही, ये बात बता दी थी कि ये Precis मुश्किल है. ये Precis वो Precis है जो आखिरी स्टेज पे करने वाली Precis है. Almost fortnight before the commencement of the exam. By then you mentally get matured regarding how to tackle this kind of philosophical text or literary text. ऐसी text आ जाती है तो 2 readings sufficient नहीं होती इसके लिए. You must go for 3 to 4 readings और इस पे पेपर वर्क करें, रफ वर्क करें, तब आप इसमें से सही तौर पे पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी फिलोसॉफिकल या लिटरेरी टेक्स्ट पैसेजेस हैं एक्चुअल जो Precis आई हुई हैं पास्ट पेपर्स में, जब आप करें तो उसको इंतहाई सिंपल बना के लिखें ताकि रीडर फील करे कि भाड़ में गई एक्चुअल Precis वो ट्रैश है जो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा, जो नीत्शे ने लिखा, जो मॉन्टेन ने लिखा. दफा करें उसे. इस स्टूडेंट की Precis से मुझे समझ आ रही है. दिस मस्ट बी समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. आई हैव टोल्ड यू that during in 2007 96% people
got failed in Prezi writing merely because of one grievous fault. Even some of the people who were gems for us, and we were sure that they won't face failure, but they failed because they wrote it in first person or either second person. If you remember, I gave you the third point while dictating you the points that Precis is always written in third person. In third person. Got the idea? Preci हमेशा third person में लिखी जाती है. This is important. So, अब मैं पढ़ने लगा हूं, गौर कीजिए और इसी से आपने अपनी प्रेसी को समझना भी है. ग्रामेटिकल एरर्स के लिए हफ्सा आपको ग्रामर पे काम करना है. हफ्सा बेटा, ठीक हो गया? एक सेकंड जी, मैं कमेंट ले लूं फिर आगे चलता हूं. I have realized one thing. While writing titles of Prezi, one should focus on cause if the passage is about cause and effect relationship. Well done, Tahira. In that way, you will be successful. Like in the given Prezi, learning is the cause and critical analysis. Personality development is the effect of the process. Well understood this time, Tahira Khan. मेरे ख्याल में अगर ये अप्रोच सेन में रखेंगे तो हर प्रेसी का टाइटल ठीक आएगा. शाबाश, बेहतरीन. अब मैं पढ़ने लगा हूं जी, सुनिए प्रेसी को. नो मोर कमेंट प्लीज, अभी ना दीजिएगा चैट में कुछ भी. सुन लें. इसका टाइटल है इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग. इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग. अगर आप इसके साथ देना चाहें तो दे सकते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग या डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. थोड़ा सा लंबा हो जाता है. अब गौर से सुनिए, कितने प्रिसाइज सेंटेंसेस होंगे इसके. कहते हैं द रीडर इज श्योरली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑथर ऑफ एनी वर्क ही इज रीडिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. दोबारा बोल रहा हूं, द रीडर is sure to be influenced by the author of any work he is reading consciously or unconsciously. Not only literary taste, but whole personality is affected by what is read by a person. It is not so that an adolescent is more influenced by one poet or one after the other poet because of his immature mind. ऐसा नहीं है कि उसका immature mind होता है adolescent का, इसलिए वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. कहते हैं the same can happen with a mature person who has not developed his critical viewpoint by excessive reading. मेच्योर आदमी के साथ भी यही हो सकता है अगर उसने एक्सेसिव रीडिंग के साथ साथ अपनी क्रिटिकल जजमेंट नहीं डेवलप की तो. ठीक है. रीडिंग डिफरेंट ऑथर्स one after the other protects man from being occupied by a single literary figure. Extensive reading does not mean increasing knowledge only, but it enables a person to stand the over effects of any single author and grow his own critical outlook. Got the idea? ईमानदारी से बताएं, ये सिंपल लैंग्वेज नहीं है और सिंपल तरीके से आपको आइडियाज नहीं समझाए गए हैं. ठीक है. अपनी प्रेसी को सिंपलिसिटी के लेवल पे रखें. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी प्रेसी दी है कि अगर एक्चुअल पैसेज में साइड पे रख देता तो वो प्रेसी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो थी नहीं. वो मिसपरसेप्शन थी, परसीव नहीं कर सके आप. जी मैं इसका ड्राफ्ट सेंड करवाता हूं. अमीर हमजा, मैं अभी आपको ड्राफ्ट सेंड करवाता हूं. ठीक है. हसन कह रहे हैं 4 times reading and then almost 2 rough sketches, then I understood the text. That is what I am saying, Hassan. I endorse your experience and I will acknowledge and will implement, request others कि ऐसी प्रेसिस को 3 से 4 रीडिंग्स दे दें. कोई हर्ज नहीं है. इस पूरे पेपर में इनफॉर्मली प्रेसी ही आपका बेंचमार्क है जिसने आपको इस बारे में ये अवेयरनेस देनी है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना. दाऊद, इट वाज वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक टुडे. आप प्रेसी को अच्छा हैंडल कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन इस प्रेसी में आपका कोई स्पार्क नजर नहीं आया. सॉरी टू से, माइंड नहीं करना है इस बात को. और आपने खुद इसका इतराफ कर लिया है कि आपने एक रेटिंग दी. प्लीज 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 इस किस्म की प्रेसिस को रेटिंग दीजिए. गॉट द आइडिया? 2-3 रेटिंग देंगे आप, इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी. मैं आपको ये सेंड भी करवाता हूं, आपको पता चलेगा ये प्रेसी कैसे करनी चाहिए थी. वैसे तो ये ज्यादती होती है इस किस्म की प्रेसी देना जो एक पर्टिकुलर लिटरेचर का स्टूडेंट तो अटेम्प्ट कर ले, ये फिलॉसफी का. व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ साइंसेस? ठीक है.
ह्यूमैनिटीज वाले, साइंसेस वाले, लॉ वाले, इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस वाले क्या करें बेचारे। तो ये एक ज्यादती होती है इस किस्म की प्रेसी देनी, जो एक सेगमेंट तो अटेम्प्ट कर ले बड़ी अच्छी तरह, बाकी ना कर सके, ये ज्यादती होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। But reading so many times and drafting 2 to 3 times would take more than 55 minutes. No problem, Ahmed Shah. I told you कि अगर आपको अप्लाइड ग्रामर आती है पेपर में, वो 50 मिनट की गेम होती है। आपको यकीन करें, पेपर में अगर आप चाहें तो 1 घंटा 25 मिनट भी आपको प्रेसी के लिए मिल सकते हैं। When you read my presi, first time you gave me compliments, but second time you said it's not good, so I am quite confused. Sobia, आपकी प्रेसी बेहतर है, लेकिन मैंने आपको कहा था, कॉम्प्लीमेंट दिया है मैंने, लेकिन इसमें फॉल्ट्स हैं। अभी आप लोगों को पता लग गया होगा कि फॉल्ट्स क्या है। महक थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इट श्योरली अफेक्ट्स मी व्हाट एवर आई ईट, ठीक है। अब आपने कन्वर्ट करना महक, आपने लिखना है whatever the writer eats, it surely affects him. जी बेटा, ये एक इनको सेंड करना है टेक्स्ट मैसेज, पेपर मुझे वापस दे दीजिए। फ्रैक्शंस पे आ रहा हूं जी। नॉट एट ऑल, सारे एस्पेक्ट्स को देखिएगा आसान, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। ये एक मिसपरसेप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि पूरे पेपर में एक डिस्क्रिप्टिव या कंपोजिंग आर्टिकल जो आ रहा है वो आपका प्रेसी है। बाकी में तो आपकी इतनी एबिलिटी नजर नहीं ना आनी। बाकी तो इवन फिक्रे मैंने स्टूडेंट देखा है उनको क्रैम आउट भी कर लेते हैं, ईडियम, पेयर ऑफ वर्ड, ये वो। ये एक ऐसा स्पेसिमन है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड सामने आता है, ठीक है। इसलिए वो इस पे ज्यादा फोकस्ड होता है। ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो इसी भी बेस पे आपको नंबर देता है, ना एफपीएससी की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है। गॉट द आइडिया? ठीक हो गया जी। सर सिंपलिसिटी से क्या मुराद है? सिंपल, जो समझ आए, आसानी से बात करना, ठीक है, आसानी से बात करना। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बजाय ये कि मुश्किल पसंदी की तरफ आए, ठीक है। आई रोड इट यूजिंग टफ वर्ड टू दिस सेड के इजी करें, इजी की रहे हैं, एक्टिव पैसिव लग रहा है, नहीं नहीं इजी करने हैं, इजी करने। शजिया इजी लिखें, प्रेसी आसान वर्ड्स में होती है, ठीक हो गया। आ रहे हैं जी क्रिटिक्स की तरफ। अब देखिए ना, हर एक चीज का अंदाज है। आपको याद है जब मैंने रिडंडेंसी आपको पढ़ाई थी, तो आपको 5 काइंड्स ऑफ रिडंडेंसी पढ़ाई थी, टोटोलॉजी, प्लोनिज्म, सर्कमलोक्यूशन, वर्बोसिटी पढ़ाई थी ना। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि किस तरह हम वर्बोसिटी देते हैं, उनके अंदर वर्बोसिटी देते हैं, ठीक है। बेटर टू अटेम्प्ट प्रेसी एट द एंड, आईफोन, बेटर टू अटेम्प्ट प्रेसी एट द एंड। अब आ रहे हैं जी अपने काम की तरफ, थोड़ा सा इसको टेकअप कर लें। हमारा कंपोनेंट है, कोई मुझे गाइड करेगा कि हमने लास्ट सेंटेंस कौन सा? हाँ जी आ गया, समझ आ गया, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं जी, भूल जाए प्रेसी को अब थोड़ी देर के लिए। बी विजिलेंट एंड कम टूवर्ड्स द करेक्शंस जी। वन मस्ट माइंड हिज on duty. One must find his own duty. Yes, please. Do it. One must find his own duty. शाबाश, अहमद शाह कह रहे हैं one's on duty। यही चीज है जो आज आपकी प्रेसिस में बहुत ज्यादा आई है। एवरीवन लिख के आगे आप देयर दे रहे हैं, प्रोनाउंस का डिसएग्रीमेंट आया है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का आया है, ठीक है। गॉट द आइडिया? One must mind his own duty, his own business भी कह सकते हैं। अब देखिए, one हमारा यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है, इसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं ग्रामर की रूप से। अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन देंगे तो इन एग्रीमेंट यहां भी इंडेफिनेट आना। One must mind one's apostrophe s, one's on duty। अगर यहां पे ही होता तो फिर his ठीक था।
He must mind his on duty. She must mind her on duty. They must mind their on duty. Got the idea? इसको कहते हैं agreement of the pronouns, जिसकी आज आपने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और मैंने इंडिविजुअली एक एक को गाइड किया है कि आपने यहाँ everyone दिया है, anyone दिया है, इसका मतलब सिंगुलर प्रोनाउन। आगे आप देयर नहीं दे सकते, ही देंगे आगे आप। क्लियर? सो ये आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि प्रोनाउंस मस्ट बी इन एग्रीमेंट। जी नेक्स्ट, स्लिम इज स्ट्रॉन्गर देन मी। स्लिम इज स्ट्रॉन्गर देन मी। शाबाश। come up with the correct answer. I, जी उस्मान असलम, सब आलिया नवीद, आई बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आई एम नहीं लिखना, सिर्फ आई। क्यों? गौर करना है इस पे, हो सकता है आपको समझ ना आए। अगर किसी भी फिक्रे में हमारा सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आएगा तो आगे आने वाले तमाम प्रोनाउन नॉमिनेटिव ही होंगे। व्हाट डज इट मीन? प्रोनाउंस की तीन हालतें होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, दूसरा होता है पोजेसिव और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है? जैसे कि आई, माई, मी। I have done this work. I have bought a new car. मैं अपने आप को नॉमिनेट कर रहा हूं। ये possessive case. This is my car. What's the problem with you? My car. This marker is mine. This is my marker. This marker is possessed by me. Objective case. फिक्रे के शुरू में जो आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, एंड पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। रूल क्या है? अगर फिक्रे के शुरू में हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव आ जाए, ये वाला आगे आने वाले तमाम सब्जेक्टिव ही आएंगे, नॉमिनेटिव नहीं आएंगे। ठीक है? स्लिम इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम किसी के घर जाएं, हम नॉक करें या बेल दें, अंदर से हमसे पूछा जाता है कौन, हम कहते हैं मैं। कौन? मैं। ये मैं क्या? अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं आप। इट्स आई अहमद, इट्स आई असद, इट्स आई अली। डिसेंसी डिमांड्स, एक्यूरेसी डिमांड्स के आई कह के अपना नाम बताएं। ठीक हो गया? तब ये काम बनता है। अक्सर लोग यही कहते हैं, who is there? It's me. It's me is wrong. It's I. It's I. Got the idea? It's I. इसलिए नॉमिनेटिव जहां आएगा वहां नॉमिनेटिव देना है। अब इस फिक्रे को कीजिए, This dispute is between he and I. अब पता चलेगा आपको मेरी बात की समझ आई है कि नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। No, here you are going to write him and me. अब हमें यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, ये वाला, क्योंकि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव हमने यूज ही नहीं किया। ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा। अब आपको समझ लग गई। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये फिक्रा, I, you and he are friends. I, you and he are friends. Can anybody correct this? Can anybody correct this? Usman, Aslam, you, he and I. No, only Usman Aslam is correct. इसमें आपके प्रोनाउंस के ऑर्डर की मिस्टेक है। इस फिक्रे का ऑर्डर आना है यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यूजुअल ऑर्डर क्या होता है? 2, 3 and 1. 2, 3 and 1. Second person comes first,
third comes later, and I at the end when you're talking about something good, something positive. When you're talking about the qualities of something, you nominate yourself at the end. It is the demand of ethics and mannerism. If you're going to highlight the mistakes of some people, including yourself, then place yourself right at the outset. अगर कोई बुरी बात कर रहे हैं तो I शुरू में आ जाएगा. I, you and he are enemies. लेकिन you, he and I are friends. पॉजिटिव होगा तो 2 3 1, नेगेटिव होगा तो 1 2 3, ये ऑर्डर आएगा. क्लियर? नेक्स्ट. जी जनाब. This is the bird who sings very sweet. This is the bird who sings very sweet. That. Zahida keh rahi hai that. जी जी डॉक्टर दुआ अमान बिल्कुल नहीं. आई ही एंड यू नहीं, आई यू एंड ही. दुआ अमान यू एंड ही को नहीं हम छेड़ सकते. विच बिल्कुल ठीक है जी. देखिए जी, दिस इज द बर्ड. हु नहीं आना, यहां आएगा दैट या विच, दोनों ही आ सकते हैं. वाई? हु एज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है. जबकि which and that they are used for birds, animals and for inanimated objects. जितने हमारे inanimated objects होते हैं और जितने हमारे birds and animals होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं that and which. Inanimated अगर कंफ्यूज कर रहा है तो it does mean non-living. ठीक है? उनके लिए हम फिर which और that यूज करते हैं. अब इस फिक्रे को गौर करना है. I hate all the things and persons which are not charming. I hate all the things and persons which are not charming. Is there any mistake in this sentence, or it is correct? Who are not charming? Well done. Okay. बिल्कुल ठीक हो गया जी. अब आपको समझ लग गई. अब यहां हमने who देना है. क्यों देना है? क्योंकि नियरेस्ट एंटीसीडेंट जिसको हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर करेगा, ये लिविंग बीइंग्स है. ठीक है? इसलिए who आएगा. अगर ये उलट होता ना, all the persons and things, तो फिर which ही आना था, क्योंकि nearest अब हमारे पास things है. Got the idea? So this is the way how we put reflexive pronouns. Okay? Now let's go next. To where are they going? To where are they going? Is it a correct sentence or not? Where are they going? Where are they going? शजिया मुझे कुछ बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? Yes. Where are they going to? ये टू एंड पे आना है. Where are they going to? कैसी अजीब बात है. हम हमेशा where are they going बोलते हैं. हकीकत में ये फिक्रा where are they going to है. लेकिन अंग्रेज बड़ा मुनाफिक भी है, दोगला भी है. वो इसको अलाउ भी करता है लेकिन डिसलाइक भी करता है. English people dislike all such kind of sentences ending up at a node of preposition. कोई भी फिक्रा preposition पे end up होता है वो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इजाजत देते हैं. ठीक हो गया, शाबाश. नेक्स्ट.
अब जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की आज प्रोनाउंस के एग्रीमेंट में, उनके लिए एक सेंटेंस दे रहा हूं। ईच ऑफ द naughty students were fined. Each of the naughty students were fined. Yes, it will be considered incorrect. Maria Risham, टू एंड पे लगाना पड़ेगा जी। ईच ऑफ द, अब मुस्तफा कह रहे हैं, जायदा कह रही हैं ऑल ऑफ द नॉटी स्टूडेंट्स, मुस्तफा कह रहे हैं was fine, all was yes, यहां was आना है। each of the naughty students was fined, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। each of the naughty, each of the one का मतलब होता है एक, सिंगुलर प्रोनाउन। इसके लिए इन एग्रीमेंट हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, वर्ब नहीं यूज करना। The verb is not going to be placed for students here. Mind you, each of the naughty students या each of the students, कि students में से हर एक जब हम कहते हैं तो it refers to singular subject. ठीक है? Got the idea? ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि जी everybody must face their own punishments. अब देखिए, everybody must face their own punishments. No, everybody must face his own punishment. Everybody refers to singular subject, not plural. इसलिए आगे आने वाले हमारे जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो इसके साथ एग्री करेंगे सिंगुलर के तौर पे। Everybody must face his own punishment. Got the idea? It refers to one and third person. साफ कीजिएगा जी बोर्ड बेटा। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। कपड़ा है करना। थैंक यू जी। गौर करना है, these three students were abusing each other. These three students were abusing each other. जी एवरीबॉडी के साथ हिज आता है। इट्स इज यूज फॉर नॉन लिविंग। ज्यादा फरूक, ठीक है। जी क्या आएगा जी? वन अनदर। एग्जैक्टली ऑल राइट, एग्जैक्टली ऑल राइट। ताहिरा मैंने आपको बताया है हिज इसलिए आएगा, एवरीबॉडी इज रेफरिंग टू सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दैट इज हिज। इट्स इज यूज फॉर नॉन लिविंग। जी आपने ठीक गेस किया। आपको पता है बहुत सारे लोगों की आपकी प्रेसिस में ये मिस्टेक्स आ रही हैं। यहां वन अनदर आ रहा है, क्यों? क्योंकि द नंबर एक्सीड्स 2, 2 से जब बढ़ जाए नंबर तो फिर हम वन अनदर यूज करते हैं। इफ वी आर रेफरिंग टू 2 पीपल देन वी यूज ईच अदर। ठीक है। कहां हर क्यों नहीं आएगा? वो पहले फिक्रे में हर लगा लें, कोई मसला नहीं। अगर हम ही भी कहते हैं ना आगा साहब, तो इसका मतलब ऑल जेंडर्स होता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यहां मैन से मुराद सिर्फ मर्द नहीं है आगा साहब, यहां मैन से मुराद औरत भी है। ऑल जेंडर्स, इवन ट्रांसजेंडर्स। ठीक है। कुछ हमारे यूनिवर्सल प्रोनाउंस होते हैं जी। फेमिनिस्ट में यूज हर, you can also use her, there is no problem. ठीक है। got the idea? Next, he is such an honest man
who is honored by all. He is such an honest man who is honored by all. जी जनाब, अहमद शाह साहब, आप ही ने तो अपना एक स्टैंस लिया है, तो मैंने आपको अलाउ किया, आप हर यूज कर सकते हैं माय डियर। अहमद शाह साथ ही बैकफुट पे आ गए। वेल, he is such an honest man that he is यानी हु नहीं आना। अच्छा, अभी मैं इसे करेक्ट नहीं करता या बताता नहीं कि आप में से कौन ठीक है, एक लिखिए, खुद ही इसे करेक्ट करेंगे। His pen is the same which is yours. His pen is the same which is yours. Can anybody do it? As yours, same as. अच्छा, लास्ट सेंटेंस देखिए। I ate as many apples that I could. How about this sentence? As I could. मेरे ख्याल में अब आपको खुद ही समझ आ गई है, आपने अपने आप को खुद ही ठीक कर लिया है। ठीक है, देखिए अब गौर करना है, खाना खराब हुए ना अंग्रेजा दा, अपने रूल बना लेते हैं। ये सच, सेम एंड एज, सच, सेम एंड एज। अगर किसी भी सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज में ये तीन वर्ड्स यूज हो, सच, सेम एंड एज, तो इनके बाद हमेशा एज आता है। ठीक है, हु नहीं आएगा, एज इज ऑनर्ड बाय आर, विच नहीं आएगा, एज इज यूर्स, दैट नहीं आएगा, एज आई कुड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस रूल इज ओनली फॉर 3 वर्ड्स। Whenever we use such, same and as in our principal clause in a compound sentence, in the next class we always use as. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जा रहा हूं। जी जनाब, जी, he is stronger than all the players. He is stronger than all the players. जी आलिया, ठीक है। जी आलिया, ठीक है। ज़ायदा फरूक, स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा इसमें। He is stronger than other players. Superlative degree, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, इसमें सुपरलेटिव डिग्री आनी है। He is the strongest of all the players. अगर तो यहां न्यूमरल हो ना, then 5 players, 10 players, 2 players, 6 players, फिर वो कंपैरेटिव डिग्री है। When we say he is the strongest of all the players, it means you are figuring out somebody, placing it on the highest pedestal. So here you are supposed to make use of the superlative degree of the adjective. Got the idea? अगर मैं कहता हूं he is more stronger than his brother. He is more stronger than his brother. Can you do it? Remove more. Shabash, shabash. More नहीं आएगा. We cannot use double comparatives. Stronger खुद एक हमारी comparative degree है. ठीक है? Strong, stronger, strongest. अब यहां हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके ब्रदर के साथ। ठीक है? तो
कंपैरेटिव डिग्री आनी है तो मोर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा। हाउ अबाउट दिस सेंटेंस, ही इज comparatively wiser than his sister. He is comparatively wiser than his sister. Can anybody correct it? Anyone? Only wiser again. Yes, that's fine. Comparatively कट हो जाएगा क्योंकि wiser खुद एक comparative डिग्री है. Wise, wiser, wisest. How about this sentence? She is beautiful than Rubina. She is beautiful than Rubina. Well done. ठीक है दानियाल, यहां हमने मोर लगाना है क्योंकि ब्यूटीफुल की डिग्रीज क्या होती हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। गॉट द आइडिया? अब मैं आपको एक अजीब सा फिक्रा दे रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप में से किसी से भी नहीं होना। देखते हैं। This boy is the tallest than these 5 boys. This boy is the tallest than these 5 boys. Among is the tallest of these 5 boys. कुछ लोगों ने among लिखा है, कुछ ने सुपरलेटिव डिग्री दी है। Taller among, tallest of the is taller than these 5 boys. Tallest of these 5 boys. Tallest of them. मैं अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरा हूं, आप में से किसी का भी ठीक नहीं है, किसी का भी ठीक नहीं है, ये हो भी नहीं सकता आपका। 24 घंटे भी दे दूं आपसे नहीं होना, क्योंकि फिर एक बार कहूंगा खाना खराब है ना अंग्रेजों का। एक ही सेंटेंस के लिए एक नया रूल कंपोज किया है, एक सेंटेंस के लिए एक नया रूल बनाया है, और वो क्या है गौर करना है आपने। पहले मैं इसकी करेक्ट वर्जन बता दूं। करेक्ट होगा दिस बॉय इज द टॉलर ऑफ these 5 boys. अब मैं आपको रीजंस बताता हूं। अभी मैं ऊपर आपको एक फिक्रा लिखा के हटा हूं, he is the strongest of all the players. मैंने आपको बताया कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, it is preceded by the definite article the and is followed by the preposition of. इस फिक्रे में मैं इस अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ही अपनी नौयत का फिक्रा है जिसके लिए एक नया रूल वज़ा हुआ है। रूल क्यों वज़ा है? ऊपर मैंने आपको एक बताई थी बात कि जब भी न्यूमरल आ जाता है तो वहां सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, वहां कंपैरेटिव आनी है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम उसको 5 लड़कों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन में आमतौर पे देन ही यूज होता है। जैसे हमने ये लिखा शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रुबीना, तो इसमें द और ऑफ क्यों लगा? ये इसलिए लगा है, अब रूल क्या है? whenever you compare one person with more than one persons or one thing with more than one things, ठीक है, whenever you compare one person with more than one person in terms of a quality, in terms of some quality, तो फिर ना सिर्फ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ये तो होनी ही होनी है, लेकिन इसके साथ दा भी लगेगा और ऑफ भी लगेगा। अब आप कह सकते हैं कि जी यहां क्यों नहीं आया शी इज मोर ब्यूटीफुल, या यहां क्यों नहीं आया, ठीक है, कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो बात यह है कि यहां एक को हम एक के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। रूल में क्या बता रहा हूं? when we compare one person with more than one person in terms of some quality,
तो ये यूज होता है, फोल्डर में मौजूद है। ठीक है, आपको अभी मिल जा, फोल्डर आपको मिल गया है कि नहीं, कि अभी नहीं मिला है? नहीं, ठीक है, अभी मिल जाता है, जैसे ही क्लास एंड होती है आपको फोल्डर मिल जाता है जी, अभी मिल जाता है। नेक्स्ट, ही इज जूनियर देन आई इन एज। कैन एनीबडी डू इट? नहीं सारा सुलेमान, पढ़ाई नहीं फेल हुई, ये अंग्रेजों ने एक ही सेंटेंस के लिए ऐसा रूल बनाया हुआ है, पढ़ाई आपकी इंटैक्ट है जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, रुकिएगा एक मिनट, इस फिक्र को दोबारा रिपीट कर दूं। जब हम एक शख्स को एक से ज्यादा अशखास के साथ किसी क्वालिटी के हवाले से कंपेयर करते हैं तो वहां कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होनी है, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में देन की बजाय हम द एंड ऑफ यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये आपका रूल है जी। The boy is taller of these 5 boys. Shouldn't we remove the? No, the remove नहीं करना, the आना है आगा साथ। The boy is the taller of these 5 boys. Okay? तो यहां क्या आएगा? जिस he is junior than I in age. ऊपर ले जाए जी क्वेश्चंस को। जस्ट मिनट, उल्टा लेके जा रहे हैं, हाँ यहां पे रखिएगा। Junior in age, he's junior than I, he is my junior in age. No, 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 no. He is junior to me in age. ये prepositional mistake है। Junior to, senior to, superior to, ex, इन सबके साथ preposition आती। Got the idea? Next, आगे आएंगे बेटा, साफ करना। सैयद हैदर अब्बास बैठे हैं। सैयद हैदर अब्बास, if you're present, please say yes. How are you, man? आप मेरे एक साइलेंट ऑब्जर्वर हैं ज्यादातर, but you bear very mature personality. I like you myself. God bless you. सिर्फ आपकी प्रेजेंस को इंश्योर करना मकसद था। जी एज में नहीं होता, जूनियर सीनियर में होता है। वर्ड्स है ना, अंग्रेज ने ना की करी है, अंग्रेज साडे को भी बच्चे आके अभी पूछ देने कि जी ये CUT कट है तो PUT पट क्यों नहीं है, ये पुट क्यों है। ठीक है, तो इंग्लिश डज हैव सर्टेन रीजंस। अब बच्चे को हम ये नहीं समझा सकते, ठीक है, एडल्ट को समझा सकते हैं, who does know what is phonology or phonetics, साउंड सिस्टम क्या है, उसको तो समझाया जा सकता है, हर एक को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इंग्लिश के 100 से आपे हैं, 26 आपके अल्फाबेट्स हैं, 26 इनकी साउंड्स हैं 44। गॉट द आइडिया? यहां आके प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, जी गौर करना है फिक्रे पे। मैनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। Many soldiers have lost their lives in the war. अच्छा आएगा आगे, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। Has lost his life in the war. Remove is wrong. Many a soldier have lost. Without many soldiers, ana is used with one, has, have, remove अब गौर कीजिए,
गौर कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इस अ को रिमूव कर दूं ना, अगर many soldiers have lost their lives in the war, तो ये फिक्रा ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी पिछली क्लास में कि we shall go for the needful and minimum correction। मजे की बात यह है कि इस पूरे फिक्रे पे मिनिमम करेक्शन का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन नीडफुल का हो रहा है। इस पूरे फिक्रे में अगर हम अ कट कर दें तो ये फिक्रा एग्जाम में हमारा गलत तस्वर होगा, वैसे ठीक हो जाएगा हमारा फिक्रा। उसकी वजह क्या है? मैनी अ सोल्जर, उसने डेलिबरेटली अ दिया है। हमारा एरिया ऑफ इनकरेक्शन ये है, हमें इसे स्पॉटलाइट करना। ये एक ओल्ड स्टाइल होता था कहने का, मैनी अ सोल्जर, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ एक्टर्स, ठीक है, ओल्ड स्टाइल था। राइटर्स, पोइट्स वगैरह लाइसेंशिएटेड बीइंग्स होते हैं ना, लैंग्वेज की टांगे तोड़ने की इन्हें इजाजत होती है। जैसे एक शायर कहता है, अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो। यहां अगले वक्तों से मुराद है पिछले वक्तों की। गॉट द आइडिया? सो यहां मैनी अ सोल्जर का मतलब होता है वन सोल्जर। इट रिफर्स टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए हम अ को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एरिया ऑफ इनकरेक्शन ये है। इसकी वजह से हमने पूरा फिक्रा ठीक करना है। और ठीक क्या होगा? मैनी अ सोल्जर, एस कटेगा, हैज लॉस्ट हिज लाइफ इन वॉर, इन द वॉर। इस तरह ये फिक्रा करेक्ट होगा। अगर ऑलरेडी ना होता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसकी, कि अगर अ ना होता तो फिर कैसे होता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, many students has got failed in the exam। अब इसमें हमने अ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है यहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इन एग्रीमेंट यहां प्लूरल के साथ मुझे प्लूरल वर्ब देना है, यहां मैं हैव दूंगा, हैज नहीं। गॉट द आइडिया? लेकिन अगर मैनी आ जाएगा तो फिर मुझे अपने पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसके बगैर फिक्रा ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर की मिस्टेक एक से ज्यादा हो सकती है जिनको हमने करेक्ट करना हो। मैं मसलन कहता हूं कि जी, द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग in the car. The boy is my friend who is sitting in the car. जी आलिया तभी कब्रों के अंदर चले गए हैं, ये कर सकते हैं इस फिक्रे को। The boy sitting in the car is my friend. The boy sitting in the car is my friend. Yes, Maria Resham, the boy who is sitting in the car is my friend with 2 commas. Commas भी लगने हैं। हमेशा आप भी ठीक है। ये फिक्रा कैसे ठीक होगा? The boy, comma, who is sitting in the car, comma, is my friend. इस पूरे फिक्रे में स्ट्रक्चरल मिस्टेक थी। क्यों? मैं आपको ऊपर बता के आया हूं एक फिक्रे में कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, that is placed closest to the antecedent it refers to। ये जिस भी सब्जेक्ट को एंटीसीडेंट को रेफर करता है उसके क्लोजेस्ट प्लेस किया जाता है। इसलिए हमें इस सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मिस्टेक ऑफ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस में एक से ज्यादा करेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। गॉट द आइडिया? वेल, नेक्स्ट, द रिच पीपल डू नॉट help the poor people. The rich people do not help the poor people. Anyone? The poor. Yani the rich people do not help the poor. मुस्तफा ये क्या बात हुई? कान इधर से पकड़ने की बजाय उधर से पकड़ ली। The rich don't help the poor.
यस, अहमद शाह एंड अशरफ इज राइट। इस फिक्रे की करेक्ट वर्जन है कि हमने पीपल काट देना है दोनों जगह से। द रिच डू नॉट हेल्प द पुअर। व्हाई? Sometimes what happens, our adjectives, rich and poor are adjectives. If they are taken as plural noun, अगर हम इनको nouns के तौर पे, plural nouns के तौर पे यूज करें तो फिर हमें actual noun देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? Not redundancy. Actual noun नहीं देना होता। The rich do not help the poor. The needy people, instead of needy people, the needy must be provided financial assistance by the state. All the wicked people, no, all the wicked will go to hell. All the righteous people, no, all the righteous will go to heaven. Got the idea? तो कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर हम उनको एज ए नाउन यूज करें तो उसके बाद हम एक्चुअल नाउन प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, Rashid is the wisest and intelligent of all the boys. Rashid is the wisest and intelligent of all the boys. Can anybody correct it? Yes, Ahmad Shah, you can also take this consideration into account. Very right. Most intelligent, most intelligent. Many a soldier के ना, the most intelligent. Exactly, all right. देखिए जी, Rashid is the wisest and the most intelligent of all the boys. आप ये फिक्र करेक्ट होगा। क्यों? सुन लीजिए, अगर हमारे दो एडजेक्टिव्स आए और एंड के साथ जुड़े तो पहला एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव होगा। पहला अगर कंपैरेटिव होगा दूसरा भी कंपैरेटिव होगा। पहला अगर सुपरलेटिव होगा इन एग्रीमेंट दूसरा भी सुपरलेटिव होगा। यूनिवर्सल रूल है। गॉट ना आइडिया? अब इनमें से हो सकता है आपको कई रूल नहीं आते लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से आप उन्हें ठीक करते चले जा रहे हैं। देखिए जी, आज हम इतना ही रखेंगे, आज इतना रखेंगे और कल हम आगे चलेंगे। हमारी बहुत थोड़ी सी करेक्शंस रह गई हैं, उनको जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मानूर, इफ आवर फर्स्ट एडजेक्टिव इज सुपरलेटिव तो दूसरा भी सुपरलेटिव होगा एंड के साथ। अगर पहला कंपैरेटिव, अगर ये होता ना राशिद इज द wiser and more intelligent than these 5 boys, ठीक है, तो फिर यहां कंपैरेटिव डिग्री आनी। कहने तक मकसद यह है कि यहां कंपैरेटिव होगी तो यहां भी कंपैरेटिव होगी, यहां सुपरलेटिव होगी यहां भी सुपरलेटिव होगी, यहां पॉजिटिव होगी यहां भी पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया? शाबाश शाबाश जी जनाब। पंक्चुएशन इतनी अच्छी नहीं आती, कल पंक्चुएशन की ही क्लास है अहमद शाह, कल पंक्चुएशन की ही क्लास है। कल हमने थोड़ी सी ये करनी है और उसके बाद हमने पंक्चुएशन करनी है। क्लियर हो गया? अभी आपके छोले बिक चुके होंगे, ठीक है, कानों से धुएं निकल रहे होंगे, तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे कल इंशाल्लाह, और कल हम पंक्चुएशन की क्लास भी करेंगे। आर यू फॉलोइंग वट एवर वी आर डूइंग? समझ तो लग रही है ना आपको? मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको बताता जाऊं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑफलाइन कर दीजिए।